Hello everyone, myself Shalini Sikha. How are you all? I hope you all are well. In this video, I am going to tell you the about my review of the book What Great Salespeople Do. What Great Salespeople Do is a selling book and written by Michael Bosworth and Ben Zoldan. So basically, this is a book that offers insight into effective sales techniques and strategies. Obviously, it's a selling book, so it have to be focused on the sales. So the main idea of the book, according to my point of view, is the emphasizing storytelling. When you read the book, there is so much story in this book, and when you read one by one every story, you will be amazed by the thought of the writers. Now, when I read the book, I like it so much. I really like it. One by one, I'm going to read the story, correlate the story with the cells, and it was awesome. It was, I am really telling you, the feeling was so awesome. So, obviously, the main idea of the book is the emphasizing storytelling. You have to tell the customer story about your life, his life, some correlation related to some correlation stories. So this type of stories, many type of stories you can tell the customer, so you can correlate with him very effectively. ये चीज़ ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जब हम किसी को कोई कहानी सुनाते हैं ऑब्वियसली, तो वो हमारी कहानी में हमारे साथ एक रिलेशन बनने लग जाता है उनके साथ, और वो हमें अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं। जैसे पहले जब फर्स्ट चैप्टर आप इस बुक की पढ़ोगे, तो आप देखोगे कि वहाँ पर एक CEO रहते हैं जिनका नाम जॉन रहता है। सो ऑब्वियसली आई एम नॉट रिवीलिंग द नेम बिकॉज ऐसे तो आपकी सारी जो मिस्ट्री है वही ख़त्म हो जाएगी और आप लोग फिर उसे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं समझोगे, तो इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट। तो बेसिकली एक CEO ही रहते हैं जिनसे काफ़ी लोग डरते रहते हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारे राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से अपने आइडिया को पिच किया। फर्स्ट 15 मिनट्स तो ऐसे थे कि वो काफ़ी डर गए थे, लेकिन उसके बाद धीरे 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 उन्होंने अपने आइडिया को पिच किया और फिर वहाँ पे उन्होंने डील को क्रैक कर दिया। सो और कैसे उन्होंने किया, तो उन्होंने ये किया स्टोरी टेलिंग के थ्रू। नेक्स्ट थिंग है बिल्डिंग ट्रस्ट। We have to build a trust with our customers in everywhere. When you have a relation with a customer and service provider, then you have to build a trust so they can trust upon us. And in sales, they are obviously going to trust us with the financial decision of them. So there should be a trust. So we have to more focused on building trust rather than making sales. The next thing is we have to make the customer centric approach. When you think about the customer, you will do the right thing. You are going to prompt the customer, you are going to know about the customer, you are going to know about his need, wants, demands and desires, and you are going to fulfill about all those things. So basically, the main idea of the book, you have to tell the customer some stories so they can correlate with you. By this, we are able to make some trust between customer and us, obviously, and we have to think always the customer centric approach, means customers should be our first priority always. The next thing in the book is the listening skill. Obviously, listening is the most important thing in anywhere. When you listen to someone, you have to know their feelings. You have the right to empathize with them, or you can just
The next idea of the book given by authors is the listening skill. Obviously, listening is the most important thing in any kind of business. There is a difference between listening and hearing. When we hear something, we just don't react, we don't understand the main uh, problems, the main situation of the uh, person we are talking. But when we listen to someone, we understand their needs, we understand their wants, we understand their demands. So we have to listen everyone. And in selling, most important thing is the listening skill. We have to listen to our customer. Unless, how am I going to learn what are their needs? And if I don't know the need of the customer, I don't know the want, the demand, the desire of the customer, how am I going to able to fulfill all these things? So we have to have listening skills. We have to improve our listening skill, because listening skills is a real skill. You cannot find in everyone, but obviously it's a skill. We can develop the skill. So a salespeople obviously should have the listening skill. The next thing is relationship building. When we read this book, we are going to learn that thing, that not only the we shouldn't focus only the making deals or cracking deals with the customer. Sometimes it happens when we make a deal with the customer, we just avoid them after that. After making the deals, we just avoid them, we ignore them, we stop to picking their phones up, we stop to because our work is done, we want the sales from this customer and we got the sales. No, never do that. We have to make a relationship with the customer, because you never know that now the customer, if the best publicity is the word of mouth publicity. अगर आपने एक कस्टमर को अच्छे से अपनी रिलेशनशिप बना रखी है उससे, उनके साथ आपने बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस दी है, तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो जो कस्टमर है वो दूसरे कस्टमर को लेकर आए, वो जाके बोलेंगे अरे ये वाले सेल्स पर्सन जो है ये बहुत अच्छे से बिजनेस करते हैं, ये बहुत अच्छे से बनाते हैं. इट डजेंट मैटर वेरी लॉन्ग इन विच बिजनेस यू आर, इन विच वर्क you are. If you are self-full, then you have to know how to build relationship after cracking a deal or after making your business. So this is the important thing you are going to learn when you read this book. The next thing is creating value. When you are going to read this book, you are going to know the sales people should encourage the creating value for their customers. How their products or services can genuinely benefit the customer. This is the thing we have to make them understand that this is the product that are genuinely valuable for our customers, and we are not faking any thing, that we are not giving them anything that they don't require. We are providing the best products and our best services to our customer. The next thing is understanding the buyer's journey. We have to understand the buyer's journey, what buyers is going through. We have to understand them, because when you sell something to someone, it's a kind of decision making thing, and this decision is related to financial decision. So we have to understand the journey of the customer. We have to understand how what he is going through, so uh, we can empathize with them, or that would be good for our business. The next thing is overcoming objection. Sometimes we when we try to sell something to someone, there were so many objections. When you read this book, you are going to learn about so many techniques, so you can avoid this objection or you can overcome this objection
and after that you can make yourself very higher. So and the next thing is continuous learning and improvement. वो कहते हैं ना कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको लाइफ की सारी चीज़ें आती ही हों। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट होता है, किसी न किसी में कोई ना कोई कमी ज़रूर होती है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। जब आप ये बुक पढ़ोगे तो आप ये चीज़ देखोगे कि हमें किस तरह से कंटिन्यूस लर्निंग और इम्प्रूवमेंट अपने अंदर लानी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम 4 या 5 ड्रिल क्रैक कर लेते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मुझ में तो बहुत ये आ गई, मेरे इस अंदर तो बहुत अच्छी सेलिंग स्किल्स हैं, मैं तो अच्छे से अच्छे कस्टमर को सेल कर सकता हूँ, मेरी जो प्रोफाइल है वो काफ़ी अच्छी हो गई है कस्टमर्स के बीच। लेकिन ऐसा नहीं है। काफ़ी सक्सेसफुल होने के बाद भी आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लगातार लानी चाहिए। आपको अच्छी से अच्छी चीज़ें लगातार सीखनी चाहिए ताकि आगे चलकर वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो ये बुक हमें यही बताती है। तो ये तो हो गई कि what was the main idea about the book when you are going to read this book. So this was the whole idea on the book was based. Now we are the one of the example I want to discuss with you guys that I like the most. I like the most the example was a detective name was now we talk about the thoughts, the emotion, what I was going through when I was reading the book. So when you start to read the book, you are going through the so much emotion because there is so much examples, and with each and every example you are going to learn something new, something outstanding. इवन जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी ना, मुझे लगा यार इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, पता नहीं ये सेल्स से कैसे कोरिलेट करेंगे। क्योंकि जब आप सेल्स करते हो ऑब्वियसली आप जब और बुक्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें काफ़ी सारे सेल्स की बात ही होती है, काफ़ी सेल्स के बारे में बताया जाता है कैसे आप सेल्स को अप्रोच करोगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स से उन्होंने ये बताया है कि ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पे कोई चीज़ जब सेल करने जा रहे हो जहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ आ रही है वहीं पे आप सेलिंग स्किल नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि आप इमोशनल जगह पे भी बार्गेनिंग कर सकते हो, सेलिंग स्किल यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये बुक जो है बहुत इट वाज अ फैंटास्टिक बुक, बहुत ही अच्छी बुक है ये, और मुझे पर्सनली ये बुक बहुत ही अच्छी लगी एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू रीड दिस बुक. If you want to become a great salespeople, then you have to read this book. It is amazing book, amazing, really, really very good book, and I like it so very much. So it was all my idea about the book. So बट कहते हैं ना कि जब तक आप खुद से किसी चीज़ को नहीं पढ़ते हो तब तक आप किसी भी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हो। तो मेरी मत मानिए, आप खुद से जाइए इस बुक को, या तो आप डाउनलोड कीजिए अमेज़ॉन से या फिर आप परचेज कीजिए इस बुक को, पर इस बुक को ज़रूर पढ़िए। अगर आप सेलिंग में इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली यू शुड हैव read this book. This book is amazing for salespeople. As the name describes, what great salespeople do. It's really very true to its name. So it was a very beautiful journey. When you will read this book, you will understand what I'm going to tell you about the book. So thank you very much for watching the video. To read the book, you are going through the so much emotion because there is so much examples, and with each and every example you are going to learn something new, something outstanding. इवन जब मैंने ये बुक पढ़नी शुरू करी ना,
मुझे लगा यार इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, पता नहीं ये सेल्स से कैसे कोरिलेट करेंगे, क्योंकि जब आप सेल्स करते हो ऑब्वियसली आप जब और बुक्स को पढ़ोगे तो आप देखोगे उसमें काफ़ी सारे सेल्स की बात ही होती है, काफ़ी सेल्स के बारे में बताया जाता है कैसे आप सेल्स को अप्रोच करोगे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स से उन्होंने ये बताया है कि ज़रूरी नहीं कि आप कहीं पे कोई चीज़ जब सेल करने जा रहे हो जहाँ पे फाइनेंशियली चीज़ आ रही है वहीं पे आप सेलिंग स्किल नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि आप इमोशनल जगह पे भी बार्गेनिंग कर सकते हो, सेलिंग स्किल यूज कर सकते हो। तो इस तरह से ये बुक जो है बहुत इट वाज अ फैंटास्टिक बुक, बहुत ही अच्छी बुक है ये, और मुझे पर्सनली ये बुक बहुत ही अच्छी लगी। एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू ऑल टू रीड दिस बुक if you want to become a great salespeople. Then you have, so as we discussed in this book you are going to read the many examples, and one of the most example like by me when I was reading the book was the detectives examples. The name of the detective was Anthony Taddle. He was a detective, and how he convinced Robert to accept his mistake and surrender. It was a amazing feeling. It was outstanding how he started. When he started talking, he didn't say that you are doing wrong, you are not good, you no. He started like what you are going through, I was going through. उन्होंने ये कहना शुरू किया कि तुम जिस चीज़ से गुजर रहे हो, जबकि वो बिल्कुल भी उस बंदे को पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली ऐसे बंदे को कौन पसंद करेगा जिसने अपनी ही वाइफ और अपने ही बच्चे को घर में किडनैप कर रखा है और उन्हें मारने की धमकी दिए जा रहा लगातार। लेकिन वहाँ पे उन डिटेक्टिव ने बिल्कुल इन चीज़ों को साइड में रख दिया। उन्होंने सोचा कि ये एक ऐसा इंसान है जिसको कि मैं बहुत लाइक करता हूँ और मुझे इसे जो है उसे कन्विंस करना है, इस क्राइम को मुझे होने से रोकना है। तो उन्होंने कैसे बात करनी शुरू करी। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ से तुम गुजर रहे हो ना, काफ़ी टाइम पहले मैं भी इस चीज़ से गुजर चुका हूँ और ये चीज़ बहुत ही बुरी होती है। अगर तुम मुझसे शेयर करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं। उनकी ये जो लाइन थी ना, उसकी कहते हैं जब आप ये बुक पढ़ोगे ना तो आप खुद देखोगे किस तरह से जो है उन्होंने रॉबर्ट को ओपन अप होने के लिए और खुद सरेंडर करने के लिए किस तरह से बहुत ही ईजीली मना लिया। So the example was fantastic and I liked the example very much. So it was the example I liked the most. So next thing is thank you everyone for watching the video. I hope you liked the video. So thank you.